Okay, dear students, good evening. How are you? In fact, in the previous class, I have done the basic work and I have to continue this class further. But unfortunately, due to some technical lag, I could not attend your class yesterday. So, my students, today I have to compensate this class as well. But before that, I have to make a briefing about my future program. Actually, for the sake of convenience, as you have done earlier, we have divided history in different parts. And we have to adopt the same existing approach, that is the integrated approach to the study of history. So with this purpose, I have given to you some formula in part first. Then for the part second, I have to devise another formula, and also for part third. And for part fourth, something else. मतलब मैंने जो आपको बताया है, जैसे मेरे कुछ उस दिन मेरे असिस्टेंट से पता चला कुछ मेरे जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, वो थोड़ा हिंदी को मिस कर रहे थे कुछ ज्यादा। हालांकि मैं हिंदी में बोल देता हूं और खास के टेक्निकल चीजें भी इन कोशिश करता हूं कि कुछ इंग्लिश वाले भी इंग्लिश को थोड़ा सा फॉलो करें, क्योंकि आपको राइटिंग तो इंग्लिश में ही चाहिए। तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़िया तब कर पाओगे जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा बेहतर कन्वर्सेशन होगा। तो देखिए, सो यू पीपल हैव टू ट्राई to understand the simple and you can say you have to suppose in terms of conversation I have to deliver in English, but whenever there is a technical term, some specific sentence, so I will just translate the sentence simultaneously in Hindi as well, so that you people have not to, you can say, face any sort of difficulty on this ground. My students, whenever I will finish this first one, that is, because I have not done the enough base work and I have just started the topic. After that, I have to follow two formula. Whenever I will deal with the topic associated with culture, so then I will put question of mains and prelims both. You have to solve the question of main examination and prelims, as we have done earlier in modern history, you may recall, because in world history part simply mains question. But whenever you have to deal with the preliminary part, so कल्चर पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड प्री बोथ। जो हमारा सांस्कृतिक का पार्ट है, वो कल्चर एंड हेरिटेज, वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट व्हेनेवर वी हैव टू डील विद द सब टॉपिक लाइक पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री एटसेट्रा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मेन सिलेबस, ऑल्दो इट कैन हेल्प यू to better clarify and understand the topic culture, but it is not a part of the main syllabus directly. In such topic, we have to exclusively deal with the question of prelims. So after doing some base work, then I will start asking 5 questions of prelims, as we have done earlier in modern part of history. And you people have enthusiastically responded to my question, and it was going to create a sense of responsibility among yourself, among you people. And due to this pressure, you people have to appear in the next class while being slightly more prepared. So that is, you can say, very useful method for both of us. In this way, I can engage you on daily basis, and you people will be more prompt in making the revision at your home. मतलब हम 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा करेंगे, जैसा मॉडर्न हिस्ट्री में पूछते थे। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज करके आप भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेस वर्क होने दीजिए। तो देखिए, मैं वंस अगेन आई एम रिटर्निंग टू द मेन इशू। एक्चुअली माय प्रीवियस क्लास आई हैव मेड यू क्लियर कि वी आर डीलिंग विद द टॉपिक पार्ट 1। ओके, पार्ट 1। इन पार्ट 1 दे आर द, you can say, the prehistory part and proto-history part. In the previous class, I have already made this point clear कि what is prehistory and what is proto-history. मैंने पिछले क्लास में आपको स्पष्ट कर दिया था कि prehistory means आद्य ऐतिहासिक और proto-history means prehistory means पूर्व ऐतिहासिक और proto-history means आद्य ऐतिहासिक। तो पूर्व ऐतिहासिक में हम लोगों ने 2 टॉपिक को लिया था, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मीन्स कि इन prehistory consists of Paleolithic period and Mesolithic period. Then
calculate, you can say, proto-history consists of so many subtopics, you know, and that is Chalcolithic period, हड़प्पन सिविलाइजेशन, न्यूलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक नहीं, सॉरी, न्यूलिथिक को प्री हिस्ट्री में ही रखो, हालांकि एग्रीकल्चर वहां से स्टार्ट हुआ है परंतु उसको प्री हिस्ट्री में रखो। तो पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, न्यूलिथिक को उधर रख देते। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैलकोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेट हड़प्पन कल्चर, आयरन एज कल्चर, व्हाट एवर मे बी, दैट इज इन प्रोटो हिस्ट्री। बिकॉज फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड either we are not having the literary evidence, or even if you are having the literary evidence cannot be deciphered as you find in case of Harappan civilization. या तो हमारे पास लिपि नहीं है, नहीं तो हम लिपि को नहीं पढ़ पाए। अब कहोगे दूसरा बेसिस क्या है, तो आई हैव मेड यू क्लियर कि द सेकेंड बेसिस फॉर द डिवीजन लाइक प्रोटो हिस्ट्री इज एग्रीकल्चर शुड बी इन यूज। लेकिन न्यूलिथिक को प्राय लोग प्रोटो हिस्ट्री में नहीं ले पाते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर तो वहां भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा बेहतर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है हियर, यू नो कि दैट इज इन प्रोटो हिस्ट्री, मतलब कैलकुलिथिक पीरियड। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम कैलकुलिथिक पीरियड, इन ताम्रपाषाण काल से हम लोग उसको काउंट करते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री को यहीं से काउंट किया जाए और हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बाद के काल को। तो मिस्टर अंकुर, एवरीथिंग इज ओके? यस, नो प्रॉब्लम, ओके। अब नाउ माय स्टूडेंट्स, my question is why we have selected it as the part first? Why have you selected it as the part first? And the part second is supposed to have started from Vedic period onwards. So what is the reason behind that? The reason being that the basis of deciding the part first is that for the study of this period only archaeological evidence is available. Either the literary evidence is not available or it could not be deciphered as you find in case of Harappan civilization. तो इस काल के अध्ययन में केवल हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य का आधार है, साहित्यिक साक्ष्य या तो है नहीं या फिर है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब हम लोग पिछले क्लास में आगे बढ़े थे, टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। आई एम गिविंग यू द रिमाइंड, आई एम गिविंग यू द रिमाइंडर अगेन। पैलोलिथिक पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम lakhs of years back, possibly 5 lakhs years back till 10,000 BC. It covered the lakhs and lakhs of years. We cannot say that it was monolithic in nature. Even the Paleolithic period is supposed to have entered into 3 different subphases: lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. मतलब अब समझ सकते हो कि जिसको आप पूरा पाषाण काल कहते हो, सॉरी हाँ पूरा पाषाण काल, वो बड़ा लंबे टाइम तक है, लाखों वर्ष पहले से 10,000 years बैक। तो ऐसा नहीं कि ये भी रुका हुआ है या मोनोलिथिक है, एकाश में है, इसमें भी कई सबफेजेज आए हैं। जैसे लोअर पैलोलिथिक मतलब निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक। देन कम्स द टर्न ऑफ मेजोलिथिक। तो मेजोलिथिक starting from nearly 10,000 BC, although it is not, you can say, a fixed, one thing should be clear to you. Whenever you are just using the term कि Mesolithic period is supposed to be started from 10,000 BC, it never means that all the sites appeared in 10,000 BC. Maybe some site might have appeared in 8,000 BC, some 7,000 BC, but even a single site, Mesolithic site, appeared as 10,000 BC. It means कि Mesolithic period is supposed to have started from 10,000 BC. अगर एक भी स्थल लगभग 10,000 ईसा पूर्व में आरंभ हो जाता है तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि मेजोलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व में यानी 10,000 BC में स्टार्ट हुआ। तो ये हुआ। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 BC टू 6,000 BC, in 6,000 BC न्यूलिथिक पीरियड इज सपोज्ड टू हैव स्टार्टेड एंड कीप इट एज ओपन एंडेड। इसको आप खुला छोड़ दीजिए, 6,000 BC में स्टार्ट मान लीजिए, फिर उसको खुला छोड़ दीजिए, ओपन एंडेड।
Then Chalcolithic period is supposed to be started from 3500 BCE, मतलब जब पहले मेटल के रूप में कॉपर का यूज शुरू हो गया, when copper came into use as the first metal. So this Chalcolithic period is supposed to have started. We are using the term Chalcolithic. Chalcolithic means copper plus a stone. So that is called Chalcolithic. Now, can I ask one question to you people? So far I have not taught you, but you people have to simply make a conjecture. I am asking you the question, during Chalcolithic period, what do you think? Either copper is larger in use or a stone is larger in use. If you believe that copper is larger in use, type 1. If you believe that a stone is larger in use, type 2. मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ज्यादा उसमें तांबे का यूज हुआ था या पत्थर का यूज हुआ था उपकरण के रूप में, टूल्स के रूप में. अगर आप मानते हो तांबे का यूज हुआ था तो 1 टाइप करिए, अगर आप मानते हो स्टोन का यूज हुआ था तो 2 टाइप करिए. बी फास्ट. Maximum 2. Yes. You people are brilliant enough to understand the things. Because just the use of copper started. You people are smart people. You have come to this point. How could copper replace stone so early? Because at that time, the availability of copper was too meager. अब कॉपर का पहले क्यों यूज हुआ होगा? बिकॉज इट वॉज हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट. कॉपर वॉज हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड आयरन वॉज हैविंग द लार्जर मेल्टिंग पॉइंट. सो दैट्स व्हाई यू नो कि कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड. मतलब सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट था कॉपर का, इसलिए यूज हुआ. अब कॉपर का पॉसिबली 1000 समथिंग है मेल्टिंग पॉइंट, 1000 समथिंग सेंटीग्रेड, और आयरन का 1534. तो आई थिंक 500-600 मोर centigrade temperature you need to melt for the melting of iron. So it was really a challenge at that time. अब देखिए तो Chalcolithic period के 3500. Harappan civilization is supposed to be started from 2600 BC and that will end up to 1900 BC. लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी हम अलग स्टार्ट करेंगे. बड़ी स्पेशल सिविलाइजेशन है, दैट इज द सिविलाइजेशन. अर्लियर यू फाइंड कल्चर, Chalcolithic culture, Mesolithic culture, but here you are using the term civilization that expanded in a vast region. It is supposed to be a greater achievement of the people of ancient India. So we have to deal with Harappan civilization separately. So let us finish up to Chalcolithic age first. Up, you people have to follow this formula. Set in your mind: climatic change, technological change, जलवायु संबंधी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन, चेंज इन लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन में, जीविका में परिवर्तन, चेंज इन सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन. सो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ऑफ चेंज. नाउ लेट अस स्टार्ट. First of climate change, change in climate, climatic change. Climatic change. In climatic change, you people will not have much problem. Start. Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. The 4 phases you know. First of all, I am making you clear. If you will observe the evolution of human society or the human, you can say, life, you will come to realize you can divide it in 2 phases. That is
Stone Age and Metal Age. In a Stone Age, you should be crystal clear, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. They fall under Stone Age. Then comes the turn of Metal Age. In Metal Age, there are the two phases. That is Chalcolithic phase, यानी copper phase and iron phase. Iron phase. Once again, copper phase is supposed to have started from 3500 BC. BC में समझा चुका हूं, before Common Era. And Iron Age is supposed to have started from nearly 1000 BC. तो कॉपर के बाद फिर आयरन आएगा. ये तो एक बेसिक फैक्टर ऑफ डिवीजन है. अब हम चेंज को अंडरलाइन करते हैं. पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, न्यूलिथिक और कैलकोलिथिक, पहले इसमें हम चेंज को अंडरलाइन करते हैं. तो पहले आते हैं क्लाइमेटिक चेंज पर. In climatic change, you will not find much difficulty because simply will come to know about the two phases in climatic change. Two phases. One is supposed to be the late Pleistocene. These are the new names, so I am sorry, you people will feel these are just the alien word for you. Actually है क्या कि जैसे हम historical phase की बात करते हैं, so even earlier than historical phase they are the geographical era. मतलब एक होता है historical time lag, वो बहुत छोटा होता है, जो आप हजारों वर्ष में देखते हो, ज्यादा से ज्यादा लाख वर्ष में देखते हो. लेकिन जो geographical time lag है वो करोड़ों वर्ष में. That is going to be जो बहुत लंबा है, ओवर स्ट्रेस्ड. तो माय स्टूडेंट्स, दे आर द डिफरेंट एरा इन फ्रॉम ज्योग्राफिकल नहीं, जियोलॉजिकल, सॉरी, फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैन डिवाइड इट इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन द क्वार्टरनरी इज द नियरेस्ट वन. प्राइमरी, सेकेंडरी तो बहुत, उसको प्राइमरी को पैलोजोइक एरा कहते हैं. ओके, सेकेंडरी को मेसोजोइक एरा बोलते हैं. और टर्शियर और क्वार्टरनरी कंबाइंड टुगेदर आर नोन एज सेनोजोइक. Tertiary and quaternary combined together are known as Cenozoic era. तो ये जो उसमें जो सबसे क्वार्टरनरी है, that is the nearest one for us. अब इसमें भी कितने epochs हुए? Even this quaternary is divided among different epochs. Nearest one is Paleocene, nearly 1 crore 20 lakhs year back. Then Pleistocene, nearly 20 lakhs year back, and the latest one is Holocene. Holocene, we are going across even today period of Holocene, and this Holocene age epoch is supposed to have started from Holocene era, that is nearly 10,000 BC onwards. तो हमें क्लाइमेटिक चेंज में एक लेट प्लिस्टोसिन एरा मिलता है जिसको आप पैलोलिथिक बोलते हो. Paleolithic period चूंकि 5 lakhs years back, Paleolithic period is supposed to have started in 5 lakhs years back, so it belonged to the late phase of Pleistocene era. Late phase of Pleistocene era, when there was the much effect of cold. Due to the cold, you can say there was the cold and the dry season in one sense, you can say. So this period is this late phase, the late Pleistocene phase, so that belonged to Paleolithic period. And apart from this Pleistocene, all the other era like Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic all belongs to Holocene. In Holocene, you will come to know that now climate was going to be slightly more warm, and there was the development of some moisture, and the situation, a favorable situation was created for agriculture. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जैसे हम लोग हिस्टोरिकल एरा बोलते हैं तो बहुत छोटा है,
लेकिन जियोलॉजिकल एरा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे, जैसे पहले एक प्राइमरी, अब उतना कहां जाओगे, उसको इग्नोर कर दो, कि पहले एक पैलोलिथिक एक पीरियड हुआ करता था, उसको बोलते थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी पैलोजोइक, सेकेंडरी मेसोजोइक एंड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी सेनोजोइक। तो वही क्वार्टरनरी सबसे बाद का है, और क्वार्टरनरी में भी अलग अलग एपॉक्स हुए हैं। जैसे आपको पिलियोसिन है, वो 1 करोड़ 20 लाख ईयर्स बैक है। फिर प्लिस्टोसिन है, वो लगभग 20 लाख ईयर बैक है। तो प्लिस्टोसिन का जो लेट फेज है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका पैलोलिथिक पीरियड 5 लाख ईयर्स बैक है, और होलोसिन तो स्टार्ट हुआ है 10,000 BC में, तो उसको आप प्लिस्टोसिन से जोड़कर देखो। जब जलवायु थोड़ा सा, जो क्लाइमेट है वो ज्यादा कोल्ड है, अभी लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। फिर जब होलोसिन में आते हो तो क्लाइमेट ज्यादा ड्राई होता है, मतलब क्लाइमेट वार्म होता है लेकिन मॉइस्चर आता है। एंड देन फॉर द, यू कैन से एग्रीकल्चर, द सिचुएशन, द फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड, मतलब कृषि के लिए वातावरण तैयार होता है। तो हम ये दो ही क्लाइमेटिक चेंज में बस दो ही एरा देखते हैं। अब प्रेजेंटली we are going across the same Holocene period, but now as there was the human imprint on environment, ecology and environment, so now the environmental scientist has coined a new term you people may have been familiar with. The term is anthropomorphine. So anthropomorphine is the term which has been given for climatic change, कि आज ह्यूमन ने क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए एक नया टर्म ही निकाल दिया क्लाइमेट साइंटिस्ट ने। तो क्लाइमेटिक चेंज में तो इतना ही, नथिंग एल्स, दैट्स ऑल। देन कम्स द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज, अब हियर यू आर सपोज टू नो अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज व्हिच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो, जस्ट ऑब्जर्व। देखो, whenever you are going across Paleolithic period, even Paleolithic period the things are not fixed, because Paleolithic period is long stretched period, you know, ki nearly lakhs of years. So the main, when you are going particularly under the early Paleolithic phase, so here you find ki this is known as core implements. Core implements. Core implements were normally made of the original stone, and particularly that is the quartzite stone. It was going to be too much heavy and strong. So actually during Paleolithic period of the core implements, the 3 implements were much important. You people might have heard about. One implement is hand axe. Next one is chopper, that is called chopper chopping. Next one is cleaver. अब these are the, you can say, alien name for you people, maybe a bit perplexing, but you people have to be comfortable. ये एक bit perplexing है, लेकिन थोड़ा सा comfortable आप हो जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जो हैंड एक्स है, तो वो क्या करते थे कि एक किनारे उसको, जैसे अब कोई स्टोन हुआ, उस स्टोन का one part, this one part, so they will take a flake out of it, and then you know कि they will, after breaking it, it may work as a hand axe. Sometime it was they were using hammer. मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरह के उपकरणों का प्रयोग वो करते थे जो कोड इंप्लीमेंट्स में आता था। एक हैंड एक्स, अब ये भी आश्चर्य की बात है, कुल्हाड़ी, आज की कुल्हाड़ी को देखो, हैंड एक्स को, और तब की देखो। एंड देन यू कैन से चॉपर चॉपिंग, काटने वाला, वो भी इसी से मिलता जुलता था। किसी का एक पार्ट को धारदार बनाया, किसी को दूसरे पार्ट को, मीन्स कि आइदर द वन पार्ट शुड बी शार्प एज्ड, और द both the parts would be sharp edged, both the part of the same stone would be sharp edged. So that is called chopper chopping. And cleaver is the one part should be the sharp edged, and जो क्लीवरर होता था उसको हिंदी में कहते हैं विदारिनी, जो आपकी समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश वाले बच्चों को ध्यान में करके हिंदी बोल रहा हूं और मुझे लगता है कि अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए। तो विदारणी में क्या है कि जैसे पेड़ है, तो यू आर टेकिंग द अ ट्री and dividing this tree in two parts vertically, so that is cleaver. Even they were killing at that time, they were hunting elephant as well. So elephant was having a very heavy body, so taking this cleaver they are just dividing elephant in two parts. तो ये उपकरण का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं क्रूर उपकरण। अब इसी पैलोलिथिक पीरियड में यू विल कम टू नो कि द पीपुल स्टार्टेड टू मेक द फ्लेक्स एज वेल। ये तो कोड इंप्लीमेंट हुआ फ्लेक्स। अब व्हाट इज फ्लेक्स? यू नो, फ्लेक्स इज दैट कि इफ यू हैव टेकन अ पार्ट ऑफ इट, अब सपोज दिस इज बेसिकली द स्टोन and you are taking the stone and taking a part from this stone, taking a part. अब this is, you can say, pointed hand axe, ovate axe, this is the axe also, this is axe, this was working as the axe. Now suppose this is the original stone and you are taking one flake, you are using the hammer. अब at that time क्या था कि उसको hammer भी stone का ही होता था, you are using the hammer or breaking up a smaller part from it, and then you are making the implement from this smaller part which is light and sharp, so that is called flex. तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उनका कोर इंप्लीमेंट तो होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फ्लेक्स बनाना शुरू कर दिया, और जो फ्लेक्स उनके छोटे टुकड़ों से बनता था वो धारदार भी होता था और हल्का भी होता था। तो वंस दे आर जस्ट मूविंग फ्रॉम द, it does not mean that the core, the making of core was stopped or they have tried to dissociate themselves from making the cores. It is a wrong notion. This is not the case. Core implements were as usually in use, but gradually they tried to make flex, more and more number of flex. And core implements पहले की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन they just try to make more and more flex. So according to anthropologists, some anthropologists, the attraction towards the flex, so there was growing mobility in the life of the people, because core implements were the very heavy implements. You cannot walk fastly while taking the core implements into their hand, into your hand. But if you can use the flex, so flex were of the lightweight. So while taking the flex, you can walk smoothly, you can run smoothly. तो अगर आप फ्लेक्स का छोटे टुकड़े वाले उपकरण ज्यादा बनाते हो तो मानव के जीवन में गतिशीलता बढ़ जाएगी, आप दौड़ भाग सकते हो, और कोर इंप्लीमेंट्स लेके नहीं दौड़ भाग सकते हो। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ फायदा भी होने वाला है। अब देखोगे, अब यही फ्लेक्स का वो बनाते थे एक ब्यूरिन। जब पैलोलिथिक फेज के लास्ट, यू आर जस्ट रीचिंग अप टू द लास्ट फेज ऑफ पैलोलिथिक पीरियड, so then you will come to know about the specific type of implement that is called burin. Burin, that is called bedhini. Bedhini means they were using the burin. उसको क्या बोलोगे? You are just using the burin and try to pierce a stone, or using the burin you can say making some sort of, in paintings you might have heard about that there are the two sorts of paintings. In one painting you are using color, in another sort of painting is called petroglyph. You might have, you can say, read in my study material. Petroglyph means you are cutting the wall of the stone, and you can say you are just going into a cave and using this burin and cutting this stone, and through scratching the stone you are making the picture or and making the images. So that is called petroglyph. मतलब एक तो है कि आपने कलर से बना दिया, दूसरा है कि आप एक ब्यूरिन लोगे, ब्यूरिन कहते हैं उसको, हिंदी में बेदनी बोलते हैं, and you are just scratching the stone, and through scratching you have tried to develop some image or paintings. So that is called petroglyph. तो वही ब्यूरिन का यूज करते थे। और एक है स्क्रैपर। स्क्रैपर, अब यू एट योर होम
at your home you might have observed the scraper. Even today for some vegetables you are trying to take its upper part out from the body of the vegetable. So that is called scraper. मतलब आप उस स्क्रैपर को क्या बोलते हैं, उसको छीलने वाला, मतलब किसी से कोई सब्जी है तो उसके ऊपर की परत आप उसी स्क्रैपर से उतारते हो। तो इस तरह से इस उपकरणों का यूज करते थे बेसिकली, जो फ्लेक्स का होता था, फ्लेक्स का। और ये तो दैट वाज द टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुअल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड। यू कैन नॉट imagine more from the Paleolithic period from the viewpoint of technological advancement। मतलब तकनीकी विकास में इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जान सकते हो। अब यू आर कमिंग टू मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक, अब इन मेजोलिथिक पीरियड you will underline the further technological advancement. Further technological advancement. In what way? In place of the big stone implements, you are using microliths. That is called microliths. And these microliths, its size was maximum 1 centimeter to 5 centimeter. And you cannot use this implement directly. It is not possible. Rather, you are grafting these implements, you can say the one microlith, grafting one microlith either with stone, either with not stone, either with wood, either with you can say wood implement or wooden tool, or with you can say in wooden tool or bone tool. You are taking a microlith and you are just grafting it with a wooden tool or bone tool। मतलब आप एक माइक्रोलिथ लेते हो जिसका साइज 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर है, उसको आप या तो लकड़ी से जोड़ते हो या फिर हड्डी से जोड़ते हो, हड्डी के उपकरण से। तो दैट इज गोइंग टू मेक अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड दैट इज कॉल्ड बोज एंड एरोज। बोज एंड एरोज, बोज एंड एरोज। अब देखो दिस वन, that is wooden, okay, and this part is stone, microlith। And if you can use bone or wooden tool along with some stone tool as sharpness, so then you can use it as a bow and arrow that will rise higher in the sky, and that is definitely a technological upgradation or advancement because it was the development of the missile technology। उसको पर्चे पात्र तकनीकी बोलते हैं, फेंक कर मारने वाला हथियार। मतलब चूंकि अब आप एक माइक्रोलिथ लोगे 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होगा और उसको आप एक लकड़ी के में ग्राफ्ट करके और उसको तीर की तरह इस्तेमाल करोगे। दैट इज कॉल्ड एरो एंड थ्रो बो। तो तीर कमान बन गया। अब आप पक्षियों का भी, बर्ड्स का भी यू कैन टारगेट, यू कैन हंटिंग बर्ड्स, यू कैन hunt the running animals like deer, which was not earlier possible because it was running too fast. So bows and arrows. So that is going to make more and more foods available to the people. Okay है मिस्टर अंकुर? क्या है? निखिल पूछ रहे कि सर to the invention of the fair which era started? Which once again question is not clear. To the invention of the fair। फेयर मतलब फेयर मेला। which era started? Nikhil, what is fear? I don't know. If you are expecting about the fear means ki the human fear, that is called mela in Hindi. So that started slightly more late. You cannot expect during this period at least, because in not to speak of proto-history or even not to speak of prehistory, but even in proto-history we don't find any evidence of this so-called fear. Shivangi पूछ रहे हैं from where do they get rope to bind that wooden stick?
No, actually rope, that is, cotton was not in use. They were using the rope either taking the trunk of the tree, or you can say, or they were using some sort of, you can say, animals skin or hide or skin, because at that time cotton was not in use, so they could not make the proper rope. रिंपी पूछ रही सर नियोजोइक में होलोसीन है क्या? सेनोजोइक में है, नियोजोइक में भी नियोजोइक तो मिला नहीं है. बच्चे सर प्लीज एक्सप्लेन बुरिन. Burin, if we are going to compare the burin with the today's tool, so you people are familiar with छेनी. छेनी से जो वॉल काटा जाता है या वो दीवार वगैरह पर चलाए जाते हैं. सो ब्यूरिन वॉज दैट टूल. यू आर यूजिंग द ब्यूरिन. इन हिंदी दैट इज कॉल्ड बेधनी. And you are just making a scratch in the wall, in the stone, and drawing a painting through a scratching. So this was the use of burin. Because you may have gone through this paintings, you will come to know paintings. In normally two types of paintings which were just unearthed from the cave, at that the human cave. One was the normal type of paintings, and that was there was the use of color. 16 types of colors were being the 16 types of colors were in use at that time. But apart from that, a specific type of painting was there, that is called petroglyph. So petroglyph was drawn on the stone at that time. That was in the cave. So that is petroglyph. तो वो डिफरेंट टाइप का होता था. पेट्रोग्लिफ में आपको दीवार को खरोच के आप बनाते हो, तो उसको पेट्रोग्लिफ बोलते थे. During Mesolithic period, there was not any climate change. Mesolithic, that was the Holocene, and right from the Holocene, because Mesolithic period is supposed to be started from 10,000 BC, and this period coincided with the beginning of this Holocene. So right from that time the Holocene is moving on. But I have told you recently the environmental scientist has coined the term Anthropomorphine. So Anthropomorphine is the new era, because now the human imprint is clearly visible on the climate, on the ecology and environment. So that is called Anthropomorphine. तो ये साइंटिस्ट ने इसको कॉइन किया, लेकिन हम लोग टेक्निकली अभी भी होलोसीन में ही है. Flower question, sir, how 16 types of color being used at that time? Actually white, blue, yellow, black, and different type of orange. Even I cannot count which were the 16 types of colors. But these colors were made through a specific method. Either they were using the water with minerals. ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, नो प्रॉब्लम. तो क्लाइमेटिक चेंज, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज में वी हैव डन पैलोलिथिक, कोर एंड फ्लेक्स, कोर इंप्लीमेंट्स एंड फ्लेक्स. देन वी हैव टर्न टू मेजोलिथिक. इन मेजोलिथिक व्हाट you know that is microliths whose size was 1 centimeter to 5 centimeter. And one specific thing about Mesolithic period, कि normally the size of the tools were triangular. The size of the tools was triangular. So that is called, this size of the tool. So you can very well and efficiently make the bow, or make the arrow. So my point is, this was the size of the tool was 1 centimeter to 5 centimeter. So you are just grafting this tool with the other, you can say, tools like the wooden tool or the stone, wooden tool or this bone tool.
So this is the about Mesolithic. Then you are coming to Neolithic. You are coming to Neolithic. So here I have to inform you, in Neolithic period, once again technological advancement. Technological advancement is the use of polished stoneware. Polished stoneware मतलब here actually my point is कि मैंने आपको बताया कि देखो, मैं फिर एक बार ब्रीफ कर देता हूं हिंदी में भी, ताकि हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी समझ लें, और इंग्लिश वाले को भी किसी वर्ड में कठिनाई हो तो आप, अगर मैं मिस भी कर जाऊं तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। देखो, जब आप पैलियोलिथिक पीरियड में थे, पूरा पाषाण काल में, तो आपने कोर इंप्लीमेंट्स को यूज किया। तो एक कोर टर्म का प्रयोग होता है, क्रोर, जिसको आप अंग्रेजी में कोर कहते हो, उसको हिंदी में क्रोर बोलते हैं। और दूसरा है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स में तो हिंदी में और विचित्र नाम है, शल्क। तो कोर आप मूल पत्थर से बनाते हो, शल्क का मतलब उसका छोटे टुकड़े को तोड़कर बनाते हो। अब आप ही बताओ, छोटे टुकड़े से आप शार्प उपकरण बनाओगे तो आपकी गतिशीलता बढ़ेगी, आप भाग दौड़ कर सकोगे। तो वो थोड़ा सा एडवांसमेंट है। अब जब तुम मेजोलिथिक में आए तो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा टूल बनाए, उसको बोलते थे माइक्रोलिथ, उसका नाम ही था माइक्रोलिथ्स। तो वो माइक्रोलिथ में आपने देखा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उसमें तीर और कमान का विकास हुआ और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। अब हम आए हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक के लिए एक टर्म आता है पॉलिश्ड स्टोनवेयर, उसको हिंदी में कहोगे पॉलिशदार पत्थर के उपकरण, पॉलिशदार। बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, यू आर जस्ट पुटिंग द पॉलिश ओवर दिस स्टोन, नो। Polished ware means कि earlier the stone was made through breaking a stone through another stone. So you are making the tools through breaking one stone by another. But that was roughed and rugged. That was rugged and roughed in shape, because whenever you are using this stone, that is going to damage your hand also. So not more efficient. But if you are just trying to make the polished stoneware through rubbing one stone against other, so that will be plain and you can say much soft while catching into the hand. मतलब पहले आप पत्थर से पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाते थे, टूल बनाते थे, वो बहुत रफ हो जाता था, रग्ड हो जाता था। मतलब आप हाथ में पकड़ते तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता, क्योंकि हाथ को में भी थोड़ा सा। लेकिन अगर आप पत्थर पर पत्थर को रगड़ के, रब करके बनाते हो, देन दैट इज गोइंग टू बी सॉफ्ट एंड you can catch it up with very easily in your hand. So as the polished stoneware came into use from Neolithic period, so that's why you can say कि agriculture started, one of the reasons being कि these implements were more comfortable for agrarian activities. So I will just discuss with you. So even these tools might be used in agriculture. Then you are coming to Chalcolithic period, to not to speak of Chalcolithic period, although stone implements were already in use. जो पत्थर के उपकरण है वो तो यूज में थे ही, लेकिन जो कैलकुलिथिक पीरियड है उसमें यू विल कम टू नो कि नाउ कॉपर टूल्स वेयर केम इनटू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. So as there was the use of copper tools, so it is now going to give support to agriculture and other sorts of economic activities further. So that will definitely help human society to develop further. तो जब तांबे के उपकरणों का प्रयोग शुरू होगा तो उससे मानव समुदाय का और भी विकास होगा, क्योंकि जो तांबे के उपकरण होंगे वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू इन्फॉर्म यू, with the copper implements you can, whenever you came to use the copper implements or copper tools, so with the support of copper tools you can make better stone tools, because through copper you can say tool you can cut the stone cut the stone in its proper size. So even you can use the better stone tools after developing the copper tools. जैसे आप कॉपर का जो उपकरण है उससे आप स्टोन को बढ़िया कट कर सकते हो. तो देन यू कैन से कैलकोलिथिक में कॉपर इंप्लीमेंट्स. सो माय स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन पैलियोलिथिक पीरियड कोर एंड फ्लेक्स टूल्स, देन इन मेसोलिथिक माइक्रोलिथ्स,
In Neolithic, polished stoneware, and in Chalcolithic, the copper implements, copper tools and the better stone tools. So that's over. Okay, Mr. Anko, Yes. any confusion? Aditya Pushna sir, can we say microlith gave emphasis over projectile technology? Yes, Aditya, you can say. Because in place of projectile technology, you can better use the term the missile technology, फेंक कर चलाने वाला. Abhinav Khare sir, what is the difference between flakes and microlith? Flakes were the larger in size. Flakes were definitely in place of core tools. Flakes were, you can say, smaller, but still it was much larger than macroliths, because the size of macroliths was just like, you can say, it was miniature in size, just 1 centimeter to 5 centimeter. Gaurav Khare sir, did during rubbing the stone fire discover? Yeah. Did during rubbing the stone fire discover? No, fire was in use right from Paleolithic period. Rubbing the stone became possible in Neolithic. But so far as the question of fire is concerned, so the human beings started to use fire. I'll discuss this aspect, that is in Paleolithic period. And from Mesolithic period onwards, they were using fire for cooking. Earlier they were not using fire for cooking, but they were familiar with fire. But from Mesolithic period, they started to use fire for cooking. तो वो तो पूरा पाषाण काल में ही फायर का यूज हो गया था, और मेजोलिथिक पीरियड से तो कुकिंग भी करने लगे थे. गौरव फिर पूछ रहे हैं कि सर, कैन बी सेड पेबल्स आर पॉलिश्ड स्टोन वेयर? Pebbles? No, pebbles were hammers, not polished stone. Pebbles were the hammers. That is called hammers. I am using the term hammer. जैसे आज इसको हथौड़ा बोलते हो ना, तब उसको पेबल कहा जाता था. And the strong stone was used as pebble. For example, you are going to sometime in the hill station. So in hilly region, you will find the river. And in the river, you may find the very strong stone is lying there. So the same stone was in use for pebble. It was just like the hammer. You are breaking one stone through the another, through this pebble. Sir, only copper or bronze also used in Chalcolithic age? No, bronze was not used in Chalcolithic. Later, bronze was used, but in pre-Harappan age, bronze was not in use. For the Harappan people were the earliest people in India who used bronze. They could develop bronze. But those Chalcolithic society which came earlier than Harappan civilization, they were not in. They didn't use bronze. Krishna, could you say where they found copper and how they made tools? And actually, at that time, they were on surface. They can use the mining material. For example, at that time, gold, from where they could have. Even the Harappan people were just actually at that time they were not doing mining. They were the open cast, just on the soil, on the you can say on the upper crust of the earth. Such minerals were available and they could use it. It was not that they were digging the earth and developing the mining. Sir, whether fire and domestication was adopted or not? Domestication, fire was in use, Shalini. And during Mesolithic period, even cooking started. But so far as the domestication is concerned, I will discuss this aspect, that is Neolithic. Dekho, once again, I am making clear. I am seeking pardon. I am going through subtopic by subtopic. Firstly, I have dealt with climatic factor. Okay. Then I have dealt with technological factors. Simply make me clear about technology. Are you familiar with or not? So whatever question you people have to ask, so ask from technology presently. Then we have to move for earning livelihood. Then I will talk about what was being produced, what they started to live. You can say the domestication of animals, etc., etc., agriculture. So this phenomena would be discussed in this aspect, that is called livelihood. The next one, a change in livelihood. And then the next one would be the social change. So then I will discuss about society, the relationship between male and female and community, etc. And then the culture, how do they take nature? They will just
लुकिंग टुवर्ड देयर सराउंडिंग्स। तो मैं आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको पैलियोलिथिक से लेकर और पहले तो कैलकोलिथिक फिर बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन तक डायरेक्ट चेंज पता चल जाए कि इकोनॉमिक चेंज कैसे हो रहा, टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसे हो रहा, लाइवलीहुड में चेंज कैसे हो रहा, सोशल चेंज कैसे हो रहा, और आप उसको इंटीग्रेट कर सको। तो अभी वो क्वेश्चन मत पूछिए, वो मैं अभी आ रहा हूं। पहले आप सिर्फ इतना बताइए कि टेक्नोलॉजिकल आपका क्लियर है और एनी अदर प्रॉब्लम। Darky carrying the sir is polished stone is responsible for beginning of agriculture. This was the one of the factors. Gargi actually use of polished stoneware was the one of the reasons behind the beginning of agriculture, because now the digging of earth became slightly easy. But it does not mean that it was the only factor. Even climatic factor is accountable and some other factor was accountable. I will discuss this aspect whenever I will deal with the economic, you can say the change in livelihood वाला point. शाहजहां पूछ रही है कि सर न्यूलिथिक पीरियड में पॉलिश स्टोन वेयर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता होगा। Yes, definitely. Polished stoneware, Shahjahan, that is in use in agriculture. Sir, is climate change important? Yes. Yes, then please sir explain it. Actually, whenever I'll teach, I will just talk about the change in livelihood. I'll make you clear. This agriculture is supposed to have started in the region of West Asia. What is presently is the Palestine, Israel, and Syria region. So this region is supposed to have supposed to have started agriculture for the first time in the world. So my students, here my point is, actually it was the more and more scholars believe that agriculture started in West Asia due to climatic factor. They believe that earlier there was the much rainfall, but due to the drifting of monsoon, there was the declining rainfall. So due to declining rainfall, there was the dearth of water. So water was available in certain pockets. So in search of water, human beings came in the region. And even animals came in the same region, and vegetables also, because vegetables are naturally searching the water. So even the different sorts of, you can say, flora, so they just move towards the region. So human beings, animals, and flora all gathered at the same point. And finally, you can say it led toward the domestication of animals as well as the beginning of cultivation in the world. तो क्लाइमेटिक फैक्टर तो फैक्टर है ही, चेंज में एक बड़ा फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर को माना जाता है। और मिस्टर अंकुर, should I move further? So that is, my students, that is what the technological upgradation, Now you people have to deal with change in livelihood. Change in livelihood. So during Paleolithic period, the people were Paleolithic period, people were basically hunters and food gatherers. They were earning their livelihood through hunting and food gathering. मतलब वो अपना जो जीविकोपार्जन चलाते थे वह शिकार के माध्यम से चलाते थे, या फिर उसको फूड गैदरिंग को बोलते हैं जंगली उत्पादों के संग्रह के माध्यम से। मतलब उसको वह खाद्य संग्रह उसको बोलते हैं, खाद्य संग्रह के माध्यम से।
So hunting में they were just hunting animals and using the, you can say, animals flesh as the food, and likewise they were just, you can say, gathering the forest products, like you can say different sorts of fruits and as well as honey, etc., etc. So my students, if I'm just going to ask you one question, you people have to be mentally alert. During this Paleolithic period I'm talking about, the hunting and food gathering both were having the role in providing livelihood to the people. If I'm going to ask you the question, which was more important for them at that time, either hunting or food gathering, what will you people choose? Hunting, point 1, food gathering, point 2. Be fast. Be fast, my friends. Yes, you people are smart enough. You have caught up food gathering. Because hunting is having its limitations. Suppose you have hunted some animals. So how long you can use the animal's flesh? 72 hours, 100 hours, 150 hours. After that, what will happen? The flesh would be completely rotten. You cannot consume it. So that will be useless for you. But you have done the food gathering. So obviously you can say that the gathered food could have been preserved for 15 days, 20 days, 1 month, even more than that. Honey can be preserved for some months, but even food could have been preserved for 10 days, 12 days, 15 days. So definitely the food gathering might have played a major role in their life. मतलब मैंने कहा कि जैसे आप शिकार करोगे तो क्या करोगे, कितने घंटे का, अब आवर्स मतलब 50 आवर्स, 60 आवर्स, उसके बाद तो सड़ जाएंगे ना, अब कैसे कोई कंज्यूम करेगा, आप ही बताओ। लेकिन फूड गैदरिंग अगर किया है तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे, जैसे फ्रूट्स होंगे वो ज्यादा रहेंगे, हनी तो कई महीने रह सकते हैं जिसको मधु बोलते हो। तो दिस इज द रीजन, यू पीपल आर राइट एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू कैच इट अप, थैंक यू वेरी मच। अब देखो ये तो हुआ फूड गैदरिंग। अब जब तुम मेजोलिथिक में आते हो, Mesolithic, we come to know that still the people were the hunters and food gatherers. Up here I have to inform you, earlier basically you can say earlier the historians or anthropologists were dividing this period between Paleolithic and Neolithic. They were not talking about Mesolithic, simply dividing Paleolithic and Neolithic. But later they just placed a transitional name and transitional phase, and that is called Mesolithic. Because this Paleolithic, the people were hunters and food gatherers. In Neolithic, they came from hunting and food gathering to food producing stage. But this Mesolithic period should be taken as the phase of transition. People were still, you can say, people were still associated with hunting and food gathering. Hunting and food gathering. We cannot make the claim that now the people were doing the food production. That will be a hyperbolic claim. But it is equally true that there was change in the nature of hunting and food gathering. Now you have developed the bows and arrows, so you can hunt the now flying birds, you can hunt the running animals like deer, which was not earlier possible. It was going to make the better food availability to the people. मतलब मैंने आपको कहा कि देखिए ये जो पहले जो हिस्टोरियंस थे वो मेजोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल बोलते, उसका नाम ही नहीं बोलते थे। वो बोलते थे, जैसे अब जॉन लुबाक नामक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इस पीरियड को 2 पार्ट में आप बांट दीजिए, पैलोलिथिक करिए और नियोलिथिक करिए, माने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर बाद में कहा कि डायरेक्ट लोग हंटिंग फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में तो आए नहीं,
मतलब खाद्य उत्पादन के स्टेज में तो नहीं आए, वो स्टेज उनका बाद में आया। तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज जरूर आया, संक्रमण का काल जरूर आया। उनका कहना था कि भाई संक्रमण के काल के रूप में एक मेजोलिथिक को ले लेते हैं, तो मेजोलिथिक को ले लिया, तो यही पीरियड है। तो इसमें क्या है कि हंटिंग और फूड गैदरिंग, जो शिकार और खाद्य संग्रह है, वही इस काल में भी है, लेकिन शिकार और खाद्य संग्रह की पद्धति में चेंज हो गया है। अब दे कैन यूज द बोज एंड एरो, धनुषबाण का प्रयोग कर सकते हैं, तीर धनुष का, बर्ड्स का शिकार कर सकते हैं, एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं, रनिंग एनिमल्स का। और मैं एक बात और बता दूं, दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स बट दे स्टार्टेड टू यूज द वाइल्ड वेराइटी ऑफ ग्रेन्स। हाउ? तो यू विल फाइंड हियर देयर इज वन प्लेस, सराय नाहर राय, याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद भी नहीं रहेगा। सराय नाहर राय एंड महादाह, these are the two places that is in where, so that is in Pratapgarh region of UP. So these sites were such कि from Sarai Nahar Rai you can find there some mule and some you can say grinder. तो म्यूल और ग्राइंडर मिला है। वो म्यूल और ग्राइंडर को कैसे यूज करते थे, तो उसमें क्या करते थे, जो जंगली ग्रेन्स होता था, वाइल्ड वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, सो दे वर यूजिंग द वाइल्ड वेराइटी ऑफ ग्रेन्स एंड दे वर ब्रेकिंग द ग्रेन्स एंड ट्राइंग टू टेक द, यू कैन से टेक द ग्रेन्स थ्रू म्यूल, यूजिंग द म्यूल। दे ट्राई टू, यू कैन सी break the outer cover of the grain and to take the inner portion of grain out while using the mule, and see they were just using the grinder for taking it and making it the divide further. तो ये इस तरह से उन्होंने एक तरीके से, ऐसा नहीं कि अनाजों से परिचित नहीं थे या ग्रेन से परिचित नहीं थे, वाइल्ड वेराइटी जो वो प्रोडक्शन नहीं करते थे, जंगलों में वैसे ही पाया जाता था, उनको वाइल्ड वेराइटी बोलते हैं। तो दे वर डूइंग द यूज एंड दे डिडंट डोमेस्टिकेट एनिमल्स एट दिस स्टेज, बट देयर आर द टू एक्सेप्शंस। वन इज बागौर in Rajasthan, that is a place that is called Baghor in Rajasthan, and another place is Adamgarh in MP, Madhya Pradesh. So from these two places you find some evidence of domestication of animals. अब you may ask me the question कि कैसे पता चलेगा कोई एनिमल बंधा हुआ तो दिखता नहीं कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। Actually basically the archaeologist and scientist, so they were just examining the bone of the animal. If in the bone there are the too many joints, so that reflect that this is the wild variety of animals. Animals की तो wild variety होते हैं ना, and if there are the least number of joints, it means कि it was the domesticated variety of animals. So from Baghor in Rajasthan and Adamgarh in MP, we find the domesticated type of animals, for the first time, the first evidence of domestication of animals. So that is in Mesolithic. In Mesolithic period, the people started to, you can say, it presented a phase of transition. Then comes Neolithic. In Mesolithic, one more information for you people from Pliny's point of view. One point is from Pliny's point of view, my one information is that from Mesolithic period you will come to know even potteries, do you know? That is called earthenware, which was baked in fire and that was used for cooking, etc., or putting the grains. So that was called earthen pot. So that was called pottery. So you find here the first evidence of the use of pottery from Chopani Mandu, that is a place near, this Belan Valley, that is near Allahabad. So from Chopani Mandu, you find the evidence of the first use of potteries. So in this way, you can say even the use of pottery more or less started from Mesolithic period, but it became regular from Neolithic.
Neolithic period is the phase of transition, you can say. Neolithic period, so that is supposed to be a phase of transition. And this was definitely, not phase of transition, that was, you can say, Neolithic phase was a formative phase. The great changes occurred during Neolithic period, so that prepared the basis for future civilization in the world and India. Neolithic period is supposed to have started from 6000 BC onwards in India, which is the earliest Neolithic site. So earlier you can say that it was Mehergarh, which is supposed to be the earliest Neolithic site. But recently, this status has been taken back from Mehergarh, because in UP, on the border of Nepal, there is one district that is called Sant Kabir Nagar. So there is one site, Lahur Deva. So Lahur Deva in the district Sant Kabir Nagar in UP at the border of Nepal. So that is supposed to be the earliest Neolithic site in Indian subcontinent. तो मतलब अब वही स्टेटस लाहौर देवा को दिया जाता है. पहले कहा जाता था मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है वो सबसे पहला नवपाषाण काल का स्थल है, परंतु अब उसको नहीं माना जाता है. अब ये देखो न्यूलिथिक पीरियड इतना फॉर्मेटिव फेज है कि इसमें तुम देखो कितनी चीजें स्टार्ट हुई है. पहला, ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड द सेटल्ड लाइफ, बिकॉज फॉर doing cultivation you need to have a settled life, because if you are not having the settled life, how can you protect agriculture? Ab you have sown the seeds and you are leading a nomadic life. You have sown the seeds here, in the meantime you have moved somewhere. So what will happen to these crops? So you can use the crops after sowing the seeds. You can use the crops and you can harvest the crops if you are leading a settled life. तो सबसे पहला तो यही है न्यूलिथिक का कि लोगों ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया. सेटल लाइफ, द फर्स्ट वन अचीवमेंट. सेकेंड वन अचीवमेंट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. Domestication of animals. How is possible? Actually, during this period, the human beings started to, it came from food gathering and hunting to food producing stage. Because it changed the relationship between the man, animal and earth. Earlier, the man was simply using the products which are available and provided by the earth. But man now started to intervene into the forces of nature. Now the man started to produce the animals in what way? Because now the man provided the congenial atmosphere for animals to produce the kids. मतलब अब ये हुआ कैसे होगा इसका अनुमान बताता हूं कि पहले क्या करते थे, वो जाते थे हंटिंग के लिए. तो कई बार क्या है कि दे फील टू मच हंग्री एंड दे आर गोइंग फॉर हंटिंग बट दे डिड गेट नथिंग. सो दे वर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर इन सर्च ऑफ फूड्स. फूड्स तो मिलेगा नहीं क्योंकि अब हंटिंग में कुछ मिला नहीं. सो लेटर आइडिया केम टू देयर माइंड कि इट इज बेटर कि अपार्ट फ्रॉम किलिंग सम एनिमल्स, catch up some live animals and put them in a place so that whenever we feel hunger, we will start to use it, or through killing it and we will use their flesh. So they tied together so many animals at a single place, or they have just, you can say, so later they came to realize that a smaller kid has come out of them. So they were quite excited कि oh, even is it possible? So they provided them the artificial environment for producing the kids and producing the, you can say, their kids. So in this way the domestication of animals started. मतलब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमने तो बांधे थे 10 एनिमल्स, 2 और भी बढ़ गए.
तो उनके दिमाग में आइडिया आया, फिर उनको प्रोवाइड करने लगे वो इस तरीके को, तो इन्वायरमेंट को। तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ जो जिसको कहते हो पशुपालन का शुरुआत हुई। अब एग्रीकल्चर का क्यों उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, हियर द हिस्टोरियंस आर हैविंग अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थोड़ा सा सबके अलग अलग है। अबाउट द वन पॉइंट आई हैव टोल्ड अबाउट क्लाइमेटिक फैक्टर इन वेस्ट एशिया, कि once the monsoon drifted, so there was the declining proportion of rainfall, so there was the dearth of water and water was available in certain limited pockets. मतलब मैंने आपको बताया कि पहले क्या था कि पहले वेस्ट एशिया में काफी वाटर अवेलेबल था, बाद में क्या हुआ कि वाटर कम हो गया, तो कुछ ही खास क्षेत्रों में ही वाटर अवेलेबल था, तो वहीं पर एनिमल्स भी आने लगे, ह्यूमन बीइंग्स भी वहां पहुंच गए, और जिसको वनस्पति कहते हो वेजिटेबल्स, उनको भी तो वाटर की सर्च होती है, तो वो भी वहां पहुंच गए। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण लोगों ने फिर एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी, मैंने आपको बताया था। सेकेंड फैक्टर इज अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, whenever the population, there was the growth in population, so some sort of mismatch was created between the availability of the foods and the demand of the population. So due to the gap created between the demand of the population and the availability of the food, so now it created a challenge before the people and they moved towards food production. मतलब अब क्या है कि जनसंख्या ज्यादा हो गई और जो खाद्य की उपलब्धता थी कम थी, फूड की अवेलेबिलिटी कम था, तो पहले तो लोग जो अवेलेबल फूड्स थे उसी को यूज करते थे, अब वो नए फूड्स की तरफ चले गए। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ फूड्स हुआ, और उसके बाद दे स्टार्टेड टू यूज द पॉटरीज, एंड पॉटरीज वेर बीइंग यूज्ड for preserving the grains, and the pottage were used for cooking both. So in this way you can see settled life, domestication of animals, production of grains, and the use of pottery. These are the features of Neolithic period in economic field. I think, are you clear, Mr. Ankur? Any problem? अब चेंज इन सोशल, एक क्वेश्चन है सर, कृति पूछ रही है सर, मेसोलिथिक में भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है? नहीं, मेसोलिथिक में कृति पॉसिबली यू हैव नॉट नोटिस्ड व्हाट आई हैव टोल्ड। मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक पीरियड है, उसमें रेगुलर डोमेस्टिकेशन ऑफ, आपका हिंदी में क्वेश्चन है, इसका मतलब आप हिंदी में ही आंसर चाहोगे। जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है, वह डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मेसोलिथिक में रेगुलर नहीं है, उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मैंने दो जगह का नाम बताया, एक बताया कि एमपी में आदमगढ़ है और राजस्थान में बागौर है, बट यू कैन टेक देम द एक्सेप्शन। अगर तुमसे कोई यह पूछे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रेगुलर कब से शुरू हुआ, तो यू हैव टू प्रेफर न्यूलिथिक पीरियड। फर्स्ट पूछ रहे सर, व्हेन डिड herders started during Neolithic or Mesolithic period? What? When did herders started during Neolithic or Mesolithic? अरे हर्डर्स वही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को हर्डिंग ऑफ एनिमल्स बोलता है, दैट इज कॉल्ड हर्डिंग, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड ऑब्वियसली। इन मेसोलिथिक पीरियड यू फाइंड एक्सेप्शंस, बागौर एंड आदमगढ़ आर एक्सेप्शंस। Yes, question sir, we can say that cooking was started in Mesolithic period. Yes, for cooking you have to mention about Mesolithic period. कनक करेंगे सर, नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं? Kanak, please presently go through it. Apart from that, I have told you go through NCERT book class 6 first. Then you have to go through the class 7th first, because if you people are going to gather too many facts, so that will spoil your whole structure. देखो,
एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिले ही न राम। तो मेरे विचार से अभी राम को ही पकड़ो, माया की तरफ मत जाओ। तुम अगर कोई ऐसे बुक को सिलेक्ट करोगे जिसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी खर जाएगा और अंत में ना फैक्ट रह जाएगा ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि फैक्ट्स तो बहुत छलिया होता है। हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि इफ यू पीपल आर गोइंग टू सिलेक्ट सम बुक व्हिच इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस, so that will going to spoil your whole strategy, because my present emphasis is, what do you think? I myself is the bundle of facts. If I could have adamant ki I have to deliver so many facts, so I could have inundated your mind with so many information and facts. But why I am avoiding too many facts at this stage? Because you people will not develop the structure. So please don't ask my question ki this guidebook and that guidebook. Let me finish this culture part first. Then in the last, I will give you the instruction ki what you people have to do. Presently, go through NCERT book, class 6th. And if you will finish the class 6th NCERT book, go class 12th ancient history. And whenever I will just cover this part 3rd, then you will cover the medieval part in class 7th and class 12th. That's all. Don't try to make a long flight, that will spoil your whole strategy. Mini पूछ रही है, why only in these two states domestication started? Any geographical reason? It is a matter of chance. No, we cannot explain any geographical region. Mini is either from MP or from Rajasthan, so she feels a bit nostalgic. In what way my state is having the excellence in domestication of animals first. Okay. Ab now social change. So far you have done it. Ab now social change. Change in society. Here I have to inform you firstly Paleolithic period. Paleolithic period. Here do you know, society is the classical example of a band society. Band society. At that time, what was the social structure? That is called a band society. So what is band society? That is an equalitarian society. Equalitarian society. Because you might have heard about band master. Band master. Because all are making a synchronous sound. While taking the instrument, they are, you can say, playing on their instrument, music instrument, and they are just producing the synchronous sound. So it was having a sense of equalitarianism, equality. So that is called band society. At that time, this society consists of 40 to 50 members. And this is the classical example of an equalitarian society. मतलब जिस सोसाइटी को आप पैरोलिथिक पीरियड में देखते हो उसका नाम है बैंड सोसाइटी. मतलब लोग मिलजुल कर रहते थे और समानता. एंड दे आर गोइंग ऑन हंटिंग स्प्री और फूड गैदरिंग. Normally women were associated with food gathering and male members for hunting. So whenever they are going on hunting spree, so on the spot there might emerge some natural leader. But once again they return home. When actually they were not leading settled life. They were normally living in rock shelter or under the open sky. या तो रॉक शेल्टर में रहते थे गुफाओं में या फिर खुले आकाश के नीचे. उनका पास कोई डोमेस्टिक हाउस नहीं था उस समय. तो लेकिन सोसाइटी बैंड सोसाइटी कही जाती थी. जो फूड गैदरिंग है विमेन एंड मेल मेंबर्स हंटिंग में रहते थे. अब माय पॉइंट इज कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल. So actually here my point is कि anthropologists who have made the study, because we don't find any clear cut evidence. It is simply on the basis of the study of the situation. The anthropologists have come to the conclusion that normally it is believed that whosoever is having the larger role in production, sorry, not larger role in production, larger role
in collecting food. So that is stronger in society. So as the male members were associated with hunting and female members with food gathering, so it appears that as food gathering was having the greater role in human life at that time, so women might have in better condition than male. मतलब the condition of women might have been better than men or than the male members. मतलब उल्टी बात है वहां, ऐसा लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कि फूड गैदरिंग में वुमेन है और जो लाइवलीहुड में ज्यादा रोल प्ले करता है उसका सोसाइटी में, उसका नॉर्मली क्या होता है कि उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत होती है, उसका कंडीशन। तो वीमेन चूंकि फूड गैदरिंग से और फूड गैदरिंग का लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उस समय हंटिंग की तुलना में इसलिए हो सकता है कि फीमेल का कंडीशन ज्यादा अच्छा हो। इट इज जस्ट ए कंजेक्चर, वी कैन नॉट से विथ एनी सर्टेनिटी, सेंस ऑफ सर्टेनिटी यू कैन से। सो दिस इज द, देन यू आर मूविंग टू मेजोलिथिक पीरियड। In Mesolithic period, you come to realize the same happens, the same thing. The same band society, equalitarian society. The condition of women might have been better than the male members because they were associated with food gathering. One important thing in Mesolithic period is, for the first time, the concept of family came for the first time during this period, Mesolithic period. Why? Actually, earlier, you can say the women were carrying the kids on their shoulder and then going for food gathering. And even the old men, they were going on hunting spree. It created some sort of difficulties in the life of old men. It was a greater challenge for them. Likewise, even female had to carry the extra load. मतलब जो महिलाएं वो कंधे पर बच्चे टांग के शिकार वो फूड गैदरिंग के लिए जाती थी, और जो मेल मेंबर्स होते थे वो हंटिंग पर जाते, बूढ़े भी जो थे, ओल्ड थे, वो भी हंटिंग पर जाते थे। तो देयर अपीयर्ड अ कॉन्सेप्ट कि व्हाई नॉट the old men from the family should be kept at home and they had to look after the kids. So that will unload even the women, and they could, and it could, you can say, lighten their burden and produce more efficiency in their work. So keeping this objective in the mind, the concept of family appeared for the first time. And now the old men were left at home for looking after the kids. So there emerged the concept of family. अब देखो, या तो मेजोलिथिक पीरियड में ही ऐसा हुआ कि बूढ़े लोगों का काम था बच्चों को देखना, या आज ही है क्योंकि अधिकतर जो मदर फादर होते हैं वो सब कैरियरिस्ट होते हैं, दे अच्छे पैकेज में अच्छे जॉब में जाते हैं, तो अपने पिताजी को विलेज से बुला के मेट्रोपोलिस में रख देते हैं ताकि हमारे बच्चों की देखभाल वो करें। तो आज भी वो कंडीशन है या उस समय कंडीशन था? हियर माय पॉइंट इज कि दिस symbiotic relationship between the grandfather and the grandson or granddaughter either existed during Mesolithic period or in present condition of 21st century. So it's my view. अब now point is कि concept of family आ गई। अब यहां से जब तुम न्यूलिथिक में जाते हो तो a lot of change. Here I have to inform one thing. My students, be clear. ये जो सोसाइटी है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है. इफ यू फाइंड अ सोसाइटी एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी, इट डज नॉट मीन दैट कि द मतलब this is some sort of socialism, you can say, because you know कि as the society is not producing enough or the community is not producing enough surplus, so that why this community is equalitarian, because once the
people started to produce more than they could consume. So there is the condition of surplus. And then some people try to appropriate this surplus in their favor. So thus started at that time division in society between the upper and the lower. Actually मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले क्या था कि एक कहावत सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जो कम्युनिटी है वो जो प्रोड्यूस करता है वो खुद कंज्यूम कर लेता है, तो कुछ सरप्लस नहीं होता है। जब सरप्लस आता है तो फिर क्या होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि उस सरप्लस को हम अपने फेवर में अप्रोप्रिएट कर लें। तो वही लोग जब सरप्लस पर कब्जा जमाते हैं तो फिर वो सोसाइटी में वही अपर स्टेटस में आ जाते हैं, तो सोसाइटी में डिवीजन होता है। तो सोसाइटी का 3 स्टेज होता, मतलब कम्युनिटी में डिवीजन होता है, 3 स्टेज होता है। एक तो मैंने कहा बैंड सोसाइटी का स्टेज, एंड द सेकेंड वन स्टेज इज दैट इज कॉल्ड chiefdom, and then third stage will be monarchy. So my students, Paleolithic period and Mesolithic period, society was a band society, and then you can say then comes the in Neolithic and Chalcolithic phase, their stage chiefdom, means ki when the agriculture started and agriculture started to produce some surplus. So a group of people just appropriated this surplus in their favor. So that developed just like the local chief or Sardar, what you know as Mukhya. So that is the rise of chiefdom during Neolithic period and Chalcolithic period, because now agriculture started. So now economy was giving some surplus production which is being appropriated by a group of stronger people who established themselves at the highest ladder of society, and they became chief. So chiefdom started. मतलब जब आपका सोसाइटी ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा तो कुछ लोग सोसाइटी के हेड पर इस्टेब्लिश कर गए और उन्हें अपने आप को मुखिया के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया, इसी को चिफडम बोलते हैं, और मोनार्की आगे आएगी। सेकेंड वन थिंग यू नो कि एज द पीपल स्टार्टेड टू लीड अ सेटल लाइफ, सो नाउ इन विलेज द कॉमन फीस्ट जिसको बोलते हो दावत, वो दावत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको कहते हो भोज, रात्रि भोज, द नाइट फीस्ट, सो दैट स्टार्टेड अमंग द पीपल। अब नाउ people started to give one other through gift because there is the agriculture production. So agrarian production was a part was preserved at home, so you can take a part and can give as a gift. तो उपहार का, गिफ्ट का लेना देना शुरू हो गया एग्रेरियन सोसाइटी। Now the condition of women, there was the, you can say, lightening of burden from women and ओल्ड मैन इन प्रोडक्शन। तो थोड़ा वुमेन पर से और ओल्ड मैन का जो कंडीशन है वो थोड़ा बेटर हुआ क्योंकि उन पर बर्डन कम हुआ। देयर वाज द लाइटनिंग ऑफ बर्डन ऑन वुमेन एंड ओल्ड मैन इन सोसाइटी। So in this way, in Neolithic society, you will find a lot of changes, and gradually you can see in this society as the surplus production started. So obviously you can see there was division in society. So are you clear or any difficulty, Mr. Ankur? और पूछ रहे हैं, there was any glimpse of culture at Mesolithic? Culture, Rahul, I have not discussed about culture. I have so far, राहुल तुम लोग हमारा स्कीम नहीं समझ पा रहे हो। हम कितना भी समझा देते हैं, तुमने फिर एक बार 2 मिनट का टाइम लूंगा। देखो my students, in part first we are going through, and we have to underline the change. उसमें पहला मैंने ड्रॉ किया, that is the climatic change. Then second one, technological change, which I have finished. Then I have done economic change and a change in livelihood, which I have finished. Then the fourth one, social change, which I have just finished. And the last one is cultural change. Then why, Rahul, are you asking about the Mesolithic culture?
today, due to the dearth of time, because I am already 8 minutes, you can say, late. So due to the dearth of time, I have not done cultural part today. Obviously, on Monday, I will do the culture part first, and then I have to do the Harappan civilization next. So, Rahul, just have patience. I'll deal with the culture part as well. In Mesolithic culture, there was one question in UPSC in 2015. So, I will deal with this question as well from men's point of view. Okay. So, should I stop here today? But I'm giving you some homework you people have to do. Just 1 minute. This actually, Rahul, you have asked me the question, so it is for making you clear. I have brought this slide as well, even in my study material. This is the Mesolithic art. This is Mesolithic paintings, you know. Dekho. Meaning of Mesolithic paintings. Everything I have just given to you, but today I didn't have the time to finish it. This is the question 2015 UPSC model answer I have given to you. Then India's first urban civilization we have to deal with after finishing up to this point. Okay, so my friends, up now you people up to Monday you have to go through this Harappan period as well. Then I will deal with Harappan civilization. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाइम लगेगा, लेकिन मेजोलिथिक फिनिश करने के बाद मैं देखता हूँ कितना टाइम बचता है. You people have to go because now our time period is 1 hour 20 minutes after doing the Hindi. That's why, my friends, I am stopping here. Okay, my friends, can I expect you people may be comfortable, and in the next class I'll whatever you can say queries you people are having, so on Monday I'll just do that. So today I'm stopping here, and good night. I'll see you. Thank you very much.